Assalamualaikum. Dear student, I am Priya Suhail and today we are going to explore the topic which is known as computer software and its types. So let's start and see what are the things which we are going to cover in this topic. So the goals for today's are we will discuss the role of software in computer, and then we will see different types of software which is very important, and then in the last we will learn about that who is the owner of software. So let's start with the definition of software. So software basically is the set of instructions that we give to the computer to perform any task. The one thing which is very interesting about software is that without software, computer behave just like a dumb machine. Okay, it cannot understand anything without software. So it's a very important part of computer that if you want to do any kind of function, any kind of a program on it, so you need a software. And the software is the thing which gives the instructions to the computer and tells the computer that how to do and what to do. So computer is nothing without software, and similarly in the same way, if I say that hardware is nothing without a software and software is nothing without hardware. When the user needs something done by the computer, he or she needs to give instructions to the computer. Instruction can be in the form of anything. Okay, for example, if you want to draw a drawing on a computer system, you want to draw a flag, so you have to give instructions to the computer, okay fine, I am going to draw a flag. Okay, so remember one thing, that software means instructions जो हम कंप्यूटर को देते हैं, हदायत जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो कोई भी काम अच्छे तरीके से हमारे लिए कर सके, और उसके लिए हमारे लिए पास होना जरूरी है हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर जो है वो आपका मॉनिटर हो सकता है, वो आपका प्रिंटर हो सकता है, वो आपका कीबोर्ड हो सकता है, इसी तरह सॉफ्टवेयर. तो जब आपके पास अगर हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ईच एंड एवरीथिंग इज प्लेस ओवर देयर, but you don't have a software, then you are unable to do any kind of work on the computer. So software is must, otherwise your machine is behave just like a cupboard. जिस तरह फ्रिज को अगर आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रख देते हैं तो वो बिल्कुल एक कबर्ड बन जाता है, इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो कोई आपको फ्रीजिंग नहीं करके दिखाएगा, आपकी कोई भी चीज कूल डाउन नहीं करेगा. लेकिन अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच करेंगे तो वो तमाम फंक्शन परफॉर्म करेगा. इसी सेम केस है कंप्यूटर के साथ. So whatever instruction you are going to give to the computer, it must be understood by the computer. यानी कि आप जो भी instructions कंप्यूटर को दे रहे हो in the form of software, वो कंप्यूटर को लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. आपने ऐसी लैंग्वेज में बात करनी है कंप्यूटर के साथ जो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके. ओके, एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज मशीन लैंग्वेज. नाउ द क्वेश्चंस कम इन योर माइंड दैट हु ओन्स सॉफ्टवेयर. Generally, if I say that none of them own the software, क्योंकि जो एक सॉफ्टवेयर बनता है it has been used by millions of people. Okay, so basically क्या होता है कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं and you provide the license of using it. For example, if I have make a software, let's say of your online system, that how we can take the online classes, so I will provide you the license of using my software. Okay, so the maker of the software is known as the owner of the software, but not the user. जो यूजर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर नहीं होते, जो मेकर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर के ओनर्स कहलाते हैं, लेकिन वो उसका लाइसेंस देते हैं आपके लिए, आपको देते हैं कि आप मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर आपने खरीदा है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपने पैकेज खरीदा है,
तो आप उसको खरीदने से उसके ऑनर नहीं बन जाते, आप सिर्फ उसका लाइसेंस परचेज करते हैं और ऑनरशिप उसी पर्सन के पास रहती है जिसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. So now let's discuss about the two major types of software. Number one is system software and the other one is application software. So we will talk about these types one by one. In today's topic, I will stick only on system software. I will give you a bird eye view of application software, but my major concern is on system software. System software are the programs that generally perform the background tasks in a computer. For example, when you switch on your computer, you will see different kinds of things like the starting process of a computer, कि जहाँ पे आपके पास विंडो का लोगो आता है और उसके बाद वो आपको मेन डेस्कटॉप स्क्रीन तक लेके जाता है. तो ये जो सारा प्रोसेस है इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली उस पर कंप्यूटर को कह रहा होता है कि ओके गेट रेडी, वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम फंक्शन ऑन यू. सो दिस इज नोन एज सॉफ्टवेयर. And what is application software? Application software basically interact with the user, interact with you to perform any task on the computer. Okay. So application software generally made for the people who want to use the computer. So here in this picture you can see that we have a hardware, then we are having an operating system, device driver, utility, language translation. These yellow colors all are system software. Okay. And you know that about the operating system, like your window, let's say in your system window 10 install, so it's an operating system. अगर मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से खत्म कर दूंगी तो व्हाट विल हैपन, आपका कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा. जिस तरह हम कहते हैं ना, विंडो खराब होगी, विंडो उड़ गई है, तो दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर बिकॉज इट इज एंगेजिंग द कंट्रोलिंग द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इसी तरह आपके पास ये साइंटिफिक एप्स आ रही हैं, बिजनेस एप्स आ रही हैं, प्रोडक्टिविटी एप्स आ रही हैं, इंटरटेनमेंट एप्स आ रही हैं. दीज आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल इंटरटेनमेंट में आप आ जाते हैं मूवी प्लेयर्स, आपके वीडियोस प्लेयर्स हैं. इसके अलावा प्रोडक्टिविटी में लाइक वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है. इसी तरह बिजनेस में डिफरेंट डेटाबेस प्रोग्राम्स हैं. सो दीज आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ I would like to explore more on system software. It basically control the overall operation of the computer. Okay, it's just like a manager who controls each and every function and operation of the computer. Similarly, it directly interact with the hardware through device driver. For example, if you bring a new printer, then you have to install the drivers. Otherwise, you are unable to use the printer. Okay. Similarly, it performs system management and maintenance with different utilities programs, like you install antivirus programs to remove viruses from your computer. So these are all system software, and all of these things need a translator, because in each and every task we have to talk with the computer. Either you are using utilities, use device driver, operating system, आपको कंप्यूटर से बात करने के लिए उसकी लैंग्वेज की जरूरत होती है. सो एज ए ह्यूमन वी यूज हाई लेवल लैंग्वेज ऑब्वियसली, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटर? अब मैं एक बात इंग्लिश में कर रही हूँ, कंप्यूटर को मेरी बात जो है वो 0101 की फॉर्म में समझ में आती है, तो मेरी बात को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड करे? सो फॉर दैट पर्पस वी नीड लैंग्वेज ट्रांसलेटर. Okay, so language translator basically helps you out in telling the computer that what it has to perform. Okay, so the first type of system software is operating system. As I told you about operating system, it controls the overall internal operation or function of the computer. It maintains file, disk drive, manage screen. Similarly, it directly interact with the computer hardware.
and other software normally does not directly interact with the hardware but through the operating system. So what are the examples of operating systems are Windows, Linux, Unix, DOS, Solaris, Macintosh or operating systems. So these are all operating system. इसमें मैं एक और चीज ऐड करती हूँ, फर्मवेयर. फर्मवेयर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट है, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम that stored permanently in your ROM, and you know that about ROM that it's a permanent memory and it cannot lose data whether the electricity is available or not. So firmware is a component of operating system that stored permanently on a chip which is known as ROM and not on the disk drive. And when the computer is powered on, whenever you switch on the computer, firmware is basically the first program that execute. वो जो आप देखते हो ना कि जब आपको ब्लैक स्क्रीन से लेके वेलकम स्क्रीन तक लेके जाता है, that is known as firmware. उस प्रोग्राम को हम कहते हैं firmware. And what it consists of, startup, few low level input output routines, and that assist a computer in finding out and executing the rest of the operating system. और इसको हम बायोस भी कहते हैं. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में या स्पेसिफिकली IBM कंपैटिबल पीसीज में इस सॉफ्टवेयर को या इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बायोस भी कहते हैं. Okay, utilities, as I told you earlier that these are the programs that particularly perform the function which are related to the computer system management and maintenance. Like antivirus program हो गए आपके, data compression के हो गए जैसे WinZip है, इसी तरह disk optimization softwares हैं, disk backup के softwares हैं. So these are all our utilities programs. Okay. Next comes to device driver. As I told you that whatever hardware you attach with your computer, you need a device driver in order to facilitate the communication between the computer and peripheral devices. Okay, so what it do, it takes the instructions and data from the computer and converts them in a form that is easily understood by a peripheral device and computer. So you can see that we can have a device driver of printers, we can have a device driver of monitor, sound system, modem, and so on. Now, language translators are the program which translate the high-level language into low-level language. And here we will see three categories of it. Number one is compiler. Compiler basically translates the program which is written in high-level language in one go. एक ही दफा में वो सारा प्रोग्राम जो है वो आपको ट्रांसलेट कर लेता है. Okay? Interpreter, what it does, it translates the program one by one. What means to say, it translates the program line by line. First of all, it translates the one statement and then execute it, and then it comes to the second statement, then it executes it. So this is work one by one statement or line by line. And the next is assembler. Assembler is a program that converts the program which is written only in assembly language code. Okay, जिसको mnemonic code भी हम कहते हैं. तो ये मशीन कोड में आपकी जो लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज एक होती है, उसका कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड को और प्रोवाइड करता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द लोडर टू लोड द प्रोग्राम. Okay, so this is all about today's lecture. So what we have studied today, we have learned about software, we have learned about its types, system software, application software, and then we explore more about system software and its function related to the computer system. I hope you understand it, and if you like it, then please don't forget subscribing my channel. Thank you.